What's up, guys? Welcome to another training, and today we'll be talking about a detailed framework for helping women transform. Me and my team have transformed over 2,300 plus women in the last 6 years. Still, 60% of our clientele is women, and literally, this is going to be a game changer because we won't just be talking about a transformation or fat loss or just health. This is a detailed framework to understand female body, physiological क्या difference होता है men और women में, female mind, female hormones, female personality and health. It's not just a health related thing. यहाँ menstrual cycle की भी बात करेंगे, hormones की भी बात करेंगे and even personality. This is interesting because this is not just linked to nutrition and science. This is linked to understanding psychology and personality well. And towards the end, I'll be sharing the exact coaching principles we use to pull off these shock the world transformations. And let's have a look at some of the shock the world transformations. Guys, keep in mind we have hundreds of transformations like these. We have a book which is called our TeamYVS Hall of Fame, where we have hundreds of transformations like these, hundreds of transformation of men and women like you, if you're watching this. So that is what. And the point of showing this to you is literally that you are at the right place. Literally, I'm going to shock you with the value in this framework, and let's go. सबसे पहले प्रिंसिपल रिवाइज कर लेते हैं गाइस कि प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन और फैट लॉस का। सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है दैट टू गेन वेट यू नीड टू ईट मोर कैलोरीज देन व्हाट यू आर बर्निंग ओवर टाइम। टू लूज वेट यू नीड टू ईट लेसर कैलोरीज देन यू आर बर्निंग ओवर टाइम। सो बेसिकली इसको कैलोरिक डेफिसिट कहते हैं कि ओवरऑल गैस आपने वेट गेन किया है तो किसी और रीजन की वजह से नहीं किया, आपने सिर्फ इस रीजन की वजह से किया कि आपने जितनी कैलोरीज बर्न करी हैं उससे ज्यादा खाई हैं ओवर टाइम, राइट? सो वेट लूज करने के लिए भी सेम प्रिंसिपल होगा। आई डोंट लाइक लाइंग टू पीपल एंड कॉम्प्लिकेटिंग स्टफ फॉर पीपल। दिस इज बेसिक फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन हु वॉन्ट्स टू लूज वेट। दिस इज साइंस एंड ये बेसिकली फिजिक्स से डिराइव्ड है ये बात, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, राइट? सो दिस इज द बेसिक ऑन विच फैट लॉस वर्क्स। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उनकी मैं बात करूंगा, सारी चीजों की बात करूंगा, बट ये बेसिक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, राइट? सो ये बेसिक आप याद रखो और कीप इन माइंड इफ योर वेट इज स्टैग्नेंट ओवर टाइम, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर लाइक हम सब कुछ कर रहे हैं बट वेट हिल नहीं रहा है, स्टैग्नेंट है, दैट मीन्स ओवर टाइम क्या हो रहा है, डे इन एंड डे आउट आपकी सारी कैलोरीज मिला के ये हो रहा है, यू आर ईटिंग एज मेनी कैलोरीज एज वी आर बर्निंग, राइट? सो अगर आपका वेट स्टैग्नेंट है, आपने प्लेट्यू हिट कर लिया है, तो हो क्या रहा है कि मे बी यू आर इन अ डेफिसिट ऑन सम डेज बट आप बाकी डेज पे उसको नलीफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल ईटिंग, बिंज ईटिंग, ईटिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ भी ऐसा हो सकता है, राइट? सो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज वेरिएबल्स कैलोरी इनटेक वाले? ईटिंग लेस एंड मूविंग मोर। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि बेसिकली मूवमेंट और एक्सरसाइज को अप करोगे उससे क्या होगा, कैलोरीज बर्न होंगी, और कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करोगे तो कैलोरीज, what would happen? You would be in a caloric deficit, right? This is basic for all humans. This is not just a female remaining related thing. But yes, women के लिए complex हो जाता है. That's why I'm making a specific framework for you guys, women, right? अगर men के लिए होता तो मैं men के लिए भी बनाता, but it's not required per se. And yes, now let's start with a female body. फीमेल बॉडी पे सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज क्या होती है एज कंपेयर टू मेन? Number one thing is that women are, biologically speaking, supposed to give birth to children, right? So that's the first thing which you need to understand, because of which a female body wants to retain more fat than a male body. ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक कॉन्सेप्ट होता है बीएमआर, इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हेन यू आर एट रेस्ट, आपकी बॉडी एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है while resting, right? So if you are at home, सुबह से उठ के आपने पूरे दिन आप अपने बेड पे लेटे हुए हो, still your body would burn some calories because because your body has to take care of your bodily function. For example, your brain function. Women overthink a lot. I'll get to that in a bit. But brain function, heart function, normal organ function, वो सारी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती है, जिसको कहते हैं बीएमआर। काफी लोग इसको आरएमआर भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नुआंसेस ऑफ द डेफिनेशन, राइट? अब विमेन में क्या चीज डिफरेंट होती है कि विमेन हैव अ पेटिट स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू मेन। दैट मींस
women का जनरली हाइट और बॉडी वेट कम होता है एज कंपेयर टू मेन. So they burn lesser calories, their body burns lesser calories at rest. ये BMR. And this BMR makes up for a lot of calories you burn throughout the day. Up to, like, depending upon the person, up to 60% of the calories you burn in a day are burnt via BMR. Right? Again, the number 60% can be variable depending upon the person. So basically अब आपका petite structure है तो क्या आपकी caloric needs overall lower है as compared to men. Right? Your caloric needs are lower because at rest your body is burning lesser calories. आपकी height कम है and body weight कम है. Right? So if you want to lose fat at a good pace, just eating lesser calories is not enough. अब ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. ये इंडियन जो देसी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फीमेल स्पेसिफिकली, उन्होंने एक लॉजिक बना रखा है कि यार आप सिर्फ डाइट कंट्रोल कर लो, एक्सरसाइज मत करो. आई हैव सीन सम न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशली इन माय सिटी जो स्पेशली कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी मेरे डाइट प्लान पे. दैट इज इडियोटिक, राइट? बिकॉज अब आपको मैं लॉजिकली समझा देता हूँ. आपकी बॉडी एट रेस्ट कम कैलोरीज बर्न करती है. अब जस्ट कैलोरिक कंट्रोल से यू वुड एंड अप स्टार्विंग योर सेल्फ. इफ यू एंड अप स्टार्विंग योर सेल्फ, क्या होगा उससे? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ईटिंग डिसऑर्डर्स. विमेन को ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, वो भी आई डिस्कस दैट इन अ बिट. बट ईटिंग डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, एंड प्लस इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. नो एक्टिविटी इज नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमन, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रेजिलियंस के लिए अच्छा नहीं है, हार्मोनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कोई एक्टिविटी ना करना, राइट? सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ डाइट वोंट वर्क. आपको डाइट प्लस एक्टिविटी करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है. अब आपको कोई जनरल नंबर दे दूं, आप you are like, see, it would vary from person to person, but pull off at least 3 to 5 sessions of intense exercise per week, like 30 to 45 minutes. You don't need to exercise for hours. Plus daily activity को आप करो. That means अपने daily steps को बढ़ाओ. Both things are important. Optimality चाहिए. If you later on work with me, I'll push you to do your best. Yes. Now a lot of women are like, okay, I can't go to the gym. It's fine. I'll set up home workouts for you. A lot of women are like, okay, I don't have equipment. It's fine. I'll still set up a workout for you. All you need to do is give at least 2 hours per week to exercise, right? Plus daily time to steps. Also, like I mentioned at the starting of this slide, कि यार आपको you women bodies are hardwired to store more body fat because of potentially bearing a child. Because pregnancy के time पे body fat helps the child survive, right? Helps the fetus survive, right? So आपको बेसिक का बॉडी का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्रीटीट स्ट्रक्चर है. और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं, बना देते हैं और डाइटिशियंस बना देते हैं कि यार सिर्फ डाइट करनी है, वर्कआउट नहीं करना. बिकॉज सिर्फ डाइट कर रहे हो तो आपको डेफिसिट क्रिएट करने के लिए, फैट लूज करने के लिए स्टार्व करना पड़ेगा अपने आप को. एंड स्टार्विंग इज नेवर सस्टेनेबल. आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ यू गाइस वाचिंग दिस, क्या हो रहा है आपके साथ? यू लूज फैट स्टार्व करके, then you regain all of it back and even more. That's idiotic. Lose weight and lose weight once and make it the last time you are dieting. Now body के बाद आ जाती है body का दूसरा part, that female have ovaries and a uterus, right? So and they have something called the menstrual cycle. Menstrual cycle आपको सीधे terms में समझा दूं. Lot of female coaches also don't understand the menstrual cycle well. सीधा लॉजिक समझा देता हूं कि यार 28 डेज की साइकिल है. फर्स्ट हाफ साइकिल को कहते हैं फॉलिकुलर फेज, सेकंड हाफ को कहते हैं ल्यूटरल फेज. फर्स्ट हाफ के वीक 2 में क्या होता है? वीक डे 7 टू डे 14 आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स आर अ लिटिल हायर. और वीक 4 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? आपकी थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी हाई होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी हाई होता है ल्यूटरल फेज के एंड में. एंड फॉलिकुलर फेज स्टार्ट कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग में. और ल्यूटरल फेज एंड कब होता है? जस्ट आफ्टर योर, as soon as the menstrual cycle starts, right? So basically luteal phase आप फीमेल बॉडी को menstrual cycle के लिए रेडी करता है, और follicular phase फीमेल बॉडी को ओव्यूलेशन के लिए करता है. ओव्यूलेशन क्या होता है? menstrual cycle का बीच का पार्ट. अगर 28 डेज की साइकिल है तो अराउंड डे 14 टू डे 16, राइट? ऑल्दो दिस वुड बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, राइट? सो सबसे बड़ा डिफरेंस है ओवरीज और menstrual cycle का फीमेल्स में. एंड
आपको बड़े सिंपल से टर्म में मैंने ये चीज समझा दी है। बट इसका इफेक्ट क्या है? अब आपको आप सोचोगे यार ये चलो, हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प मी? बिकॉज वीक टू एंड वीक फोर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? वीक टू एंड वीक फोर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके मूड में शिफ्ट आता है, एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट आता है, बॉडी वेट में शिफ्ट आता है, स्ट्रेंथ लेवल्स में शिफ्ट आता है। राइट? बॉडी वेट में आपको बता देता हूँ सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज फॉर women। वीक टू एंड वीक फोर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे योर बॉडी रिटेन्स मोर वाटर। राइट? Because anyway, up to 70 to 80% of your body is made up of water, even for men also. बट क्या होता है जब आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है वीक टू एंड वीक फोर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपकी वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, विच कैन मास्क योर फैट लॉस। इमेजिन आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो बट वीक टू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में अचानक आपका वेट 1 kg बढ़ जाता है। दैट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज आपने कोई डाइट खराब करी है, दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ एलिवेटेड हार्मोन्स। बट अगेन कीप इन माइंड, ये फैट नहीं बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है। वीक टू एंड वीक फोर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज होती है। एंड that's something which you need to understand, especially when you are following a plan. You need a coach who understands these aspects. Most coaches don't. That's why we are creating this. Coaches would see this and learn from this, right? So again, keep in mind. But water weight है, आपको मैं ये बता भी रहा हूँ, फिर भी आपको बाद में ये चीज फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी। ठीक है? एंड women on a plan means those women who are following a plan, right? So यहाँ बेसिकली menstrual cycle आपको मैंने समझा दी है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आप कोचेस नहीं हो, बट आपको समझ आ जाना चाहिए वीक टू एंड वीक फोर में क्या होता है। और काफी विमेन को होता है स्ट्रेस रिलेटेड ईटिंग करती हैं, या जब भी मूड अच्छा नहीं होता दे लाइक ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये वाली क्रेविंग्स आपकी वीक टू एंड वीक फोर में इंक्रीज हो जाएंगी। सो वी नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल कंट्रोल ऑल्सो। राइट? Next comes psychology and personality, right? No one else would teach you this because I myself am pursuing a PhD in psychology, master's in psychology career. Plus, I love learning psychology and personality, right? Women are wired to be more anxious. Kyun? Because if they are not anxious, when when they give birth to a child, who would take care of the child? मेल भी, मेल अगर टेंशन फ्री है, women आर मोर एंक्शियस, राइट? डजंट मीन एवरी ऑल women आर एंक्शियस। जनरली स्पीकिंग, जब ये पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ या मैं कोई साइंस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, राइट? These are scientific things, but these don't apply to everybody. Every human is different. That's why women need coaching, right? Even men need coaching, right? अब एंजाइटी अब एक नेचुरल ट्रेट है फॉर women, बट ट्रांसफॉर्मेशन में मैसअप करती हैं, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन में मैसअप क्यों करती है? बिकॉज इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस, आपको ट्रस्ट इन प्रोसेस बहुत जल्दी लूज करोगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू वर्क विद अ कोच। इफ यू आर वर्किंग विद अ कोच हु यू टोटली ट्रस्ट, बिकॉज देयर वुड बी डेज व्हेन यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग ऑन पॉइंट, रिजल्ट्स भी नहीं है, फिर भी आपका कोच कह रहा है यू नीड टू कंटिन्यू। यू विल ओनली कंटिन्यू इफ यू ट्रस्ट द कोच, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट? Another thing is, again linked to anxiety only, that women are generally more neurotic in nature. That means वो negative पे ज़्यादा focus करते हैं. Although human brain is wired to think about the negative for everyone, but women थोड़ी सी ज़्यादा neurotic होती हैं. Women are also more agreeable in nature. It's hard for them to say no, right? Ab again, everyone is different, guys. Keep in mind, the beauty of us being humans is that everyone is different. But ये मैं आपको generally बता रहा हूँ। ऑल्सो विमेन में इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज्यादा होता है, दे डू नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स एज मच। तो इनको एज अ कोच मैं बताऊं तो याद दिलाने की जरूरत हमें बार बार पड़ती है कि यार दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड इन द पास्ट एंड दिस इज व्हाट यू कैन अचीव। विमेन हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट इन देम। इट्स 2x एज कंपेयर टू मेन, राइट? सो ये अंडरस्टैंड करो आप। एंड अगेन एंक्शियसनेस है, इम्पोस्टर सिंड्रोम है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, अग्रीएबल भी है, ज्यादा अग्रीएबल होने में भी इशू है। यू लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट एबल टू से नो टू पीपल। लॉट ऑफ टाइम्स सेइंग नो टू अदर्स इज सेइंग यस टू योरसेल्फ, राइट? एंड women also get influenced by gimmicks easily because of all of these reasons, right? आप देखोगे 90% marketing gimmicks, especially when it comes to nutrition and stuff like that, are उनकी direction is towards women, right? Now a lot of you would be like यार क्या करें, I want to understand these things more. Big 5 personality test होता है,
वो कर लो एंड दैट वुड हेल्प यू ऑल्दो बट इट्स इन पर्सनैलिटी के डोमेन में आ जाता है, फैट लॉस वगैरह से रिलेटेड नहीं है। तो अब ये वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि वो बिग फाइव टेस्ट कर लेता हूँ। डू द बिग फाइव टेस्ट बट डू इट लेटर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। बट अगेन मैंने आपको मेन फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यार विमेन फॉल मोर फॉर मार्केटिंग गिमिक्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, राइट? बिकॉज बहुत ये सारी चीजें प्लस ऑब्वियसली लाइफ रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रेस एंड प्रेशर एंड कंफ्यूजन कैन लीड टू फॉलिंग फॉर मार्केटिंग गिमिक्स। सो बेसिकली फॉल्स विटनेस मार्केटिंग बहुत होती है टुवर्ड्स वुमेन। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर, दैट्स ऑल। नाउ ये सारी चीजें इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? अब मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा दिए, बट ये हाउ आर दीज अफेक्टिंग यू, राइट? Number one, this these all of these things and lack of a good plan can lead to slower progress and more stress, right? Again, guys, things don't you are not able to function properly during stress time, so this can lead to binges. So, right, ये stress control करना बहुत important है, right? So basically, we use specific stress management techniques and stuff like that, meditation, and obviously showing you what you are capable of in the first few weeks of the transformation plan. These are the things which we work upon, right? Next is recurring and random spikes in weight. You would see if you have already gone on a transformation journey, you would have always seen कि भाई सब कुछ on point है, weight बढ़ गया अचानक, right? But again, that's happening due to water. Week 2 and week 4 of menstrual cycle में weight getting stuck more often because deficit create होना बंद हो जाता है. That's why you need a very all-round approach which works on your psychology, your whole lifestyle, your daily steps, your workout and even nutrition. अब ये सुन के बहुत women भाग जाती हैं. They don't become our clients because they are like यार आप हमसे hard work कराओगे. But fact of the matter is I can get a lot more clients by saying that just diet would work. And कुछ cases में हम करवाते भी सिर्फ just diet से ही काम है. For example, someone is dealing with an injury or stuff like that. But in most cases, I would highly recommend daily activity because it's very good for your mental health, right? Regular activity, daily steps, and at least 2 hours of workout per week. ये तो इतना तो आप दे ही सकते हो. If not, then you have priority issues. It's as simple as that, right? Next is women easily lose trust in process, so they need to work with the coach. They need to follow a plan which they completely trust. बिकॉज ट्रस्ट नहीं है, आपने ऐसे ही बस इम्पल्स परचेज कर लिया कोई कोचिंग प्लान, यू वोंट फॉलो द प्लान, राइट? थोड़े दिन करोगे उसके बाद आप यू वुड बी लाइक ना, आई डोंट वांट टू डू इट. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशंस इन मूड, craving levels, energy levels, and higher anxiety. All of these get worsened if a woman is dealing with nutrient deficiencies. So that's one aspect which I like working on from day one itself. And it's not just for women, for men also, right? Next is regaining weight easily. That is also one thing happens. That's why you need an exit strategy with your plan. Transformation कर लिया. What is your exit strategy? How do you integrate everything in your lifestyle so that you are able to maintain your results? Right? How do you reverse that? Right? So that part becomes important. Marketing gimmicks, I have already discussed, but I would also like to discuss hopping plans too soon. इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जस्ट फॉलो प्लान विच यू कंप्लीटली ट्रस्ट. अगर नहीं करते हो डोंट फॉलो इट. कोच को ट्रस्ट नहीं करते हो डोंट टेक अप द कोचिंग, राइट? बिकॉज अप्स एंड डाउन सबकी ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में अप्स एंड डाउन आएंगे तो यू माइट जस्ट हॉप ऑन द प्लान सून एंड मे बी द प्लान यू वर फॉलोइंग वाज द बेस्ट फॉर यू. बहुत सही था बट ट्रस्ट इन प्रोसेस नहीं था, इसलिए आपने प्लान हॉपिंग कर ली thinking it's not working. Because Rome isn't built in one day, things take time. Keep that in mind. Women also have higher chances of body image related issues, right? Body dysmorphia, not liking the way you look, hating the way you look, not accepting the way you look. All of these things की higher chances होती हैं women में. And also higher incidences of health marker related issues such as PCOD and PCOS. If you're watching this video, we have a detailed framework on PCOD and PCOS. Do watch it if you're dealing with the problem. पूरा detailed next level framework है. अगर आपको यहाँ पे भी मजा आ रहा है, PCOD वाले framework में और ज्यादा मजा आएगा. And yeah, and there must be a link down below in relation to the PCOD framework. सो हेल्थ मार्कर्स के बारे में थोड़ा सा कर देते हैं. अगेन आपको बताया मैंने पीसीओडी और पीसीओएस का फ्रेमवर्क डिटेल में, क्योंकि विमेन का चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है, पीसीओडी एंड पीसीओएस में थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है.
I'm not saying it's impossible, but you need more knowledge to deal with that, right? Again, मोस्ट केसेस मैंने क्या देखा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है पीसीओडी एंड पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से होता है. सो बेसिकली अगर पीसीओडी एंड पीसीओएस ज्यादा क्या मतलब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और पीसीओडी एंड पीसीओएस है, दैट कैन लीड टू लोअर्ड बीएमआर, मोर मूड रिलेटेड इश्यूज, स्लोअर फैट लॉस बिकॉज बीएमआर कम हो गया. आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स व्हाइल रेस्टिंग. More women have more incidences of hypothyroidism, much higher than men, right? Hypothyroidism पे भी framework बनाया हुआ है, how to lose fat during if you're dealing with hypothyroidism, and ये भी higher होता है. Another thing which I've seen is कि women में not it's not just I have seen, ये studies के हिसाब से डेटा, खुद नहीं बनाया हुआ मैंने डेटा, right? Women also have higher chances of dealing with eating disorders, and it's they are and these disorders increase 3 times if they are dealing with PCOD and PCOS. So if you are dealing with PCOD, PCOS, or borderline, then eating disorders होने की chances higher, and you need smarter coaching where someone understands you, your psychology, your menstrual cycle, and your current situation, right? Next, body image issues. 79% of women, that means 4 out of 5 women deal with negative body image issues. And these issues worsen during menstrual cycle. जब menstrual cycle वाला पीरियड आ रहा है, पीएमएस वाला पीरियड आ रहा है, उस टाइम पे आपके बॉडी इमेज इश्यूज बढ़ जाएंगे. यू स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन प्रोसेस, राइट? अब थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा कि यार ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स नहीं है. माय प्रिंसिपल हेयर इज to teach you what all things are possible, so that when these things happen with you, if they are happening with you, you are able to understand and navigate like a smart human, right? Next is anxiety. आपको ये ऑलरेडी बता दिया मैंने कि यार एंजाइटी बायोलॉजी की वजह से ज्यादा होती है, कल्चर की वजह से. हमारा कल्चर फॉर अ लॉट ऑफ women, our culture suppresses us, and we are not able to express ourselves, which also causes anxiety, right? ऑल्सो एंग्जाइटी मल्टीप्लाई कैसे हो जाती है? इमेजिन करो आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी इमेज इश्यूज है, वेट फ्लक्चुएशन हो रही है वीक 2 एंड वीक 4 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, मूड रिलेटेड इश्यूज है अराउंड पीएमएस, प्लस यू हैव हैड अ प्लस इम्पोस्टर सिंड्रोम, आपको जो बताया, नॉट ट्रस्टिंग सेल्फ, नॉट बिलीविंग इन सेल्फ, प्लस failed attempts of the past. 90% of the people we work with have already tried losing fat multiple times. Then we introduce them to the last diet method, right? All of these together increase the anxiety like by a mile, right? Plus deficiencies, plus nutrient deficiencies, all of these together can increase anxiety and stress related issues, right? And that is what. Guys, अब मैं आपको सच बता दूं, my goal of the framework is not to scare you, but to empower you. Why? Knowledge and truth is empowerment. आज आपको जो चीजें पता लग गई, अब आपको नेविगेट करने में हेल्प करेंगी, राइट? मैं डराना नहीं चाहता, मैं आपको ये कहता हूँ, whenever you are following anything, do it in an informed manner. कोचिंग ले रहे हो, informed manner में लो, right? Today my goal is to equip you with knowledge, right? And this framework would help you look at health and goals through a different lens, and hence help you solve the transformation problem. If you are watching this, आप इस बार तक पहुंच चुके इस वीडियो की, इस ट्रेनिंग के, then you are dealing with the problem and you want to solve it. And you want to solve it with the all-round approach. So, this training has opened doors for you, right? Now, let's look at the coaching principles we used to pull off shock the world transformations using our last diet method, right? How do we make it the last time you are dieting? And let's look at that. Number one is coaching through empowerment. That means, how do you feel empowered? Number one thing is, yeah, motivation from outside is good, it's fine. But our goal as coaches is to empower you, right? Real empowerment comes from believing in self, which comes from seeing results. आज आप मेरा प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बनाया सब कुछ आपके लिए, एवरीथिंग इज गुड, बट टिल द टाइम यू डोंट सी रिजल्ट्स ऑन माय प्लान, you won't feel empowered, right?
Focus number one is in our fat loss and health acceleration phases to get you tangible results. And this applies to everybody, not just women, even men. Getting results, awesome results. And nothing is better than seeing the scale move. स्केल विक्ट्रीज भी मैटर करती हैं बहुत ज्यादा along with other victories. Visuals, how do you feel? What are your menstrual cycle symptoms like? All of these together change the game. Visuals, compliments, how clothes fit. Do you feel confident in skin? Are you looking at yourself in mirror multiple times? Are you feeling confident to get your pictures clicked again? Are you confident to feel go out in the public along with scale movement? All of these together change the game. And मैं कोशिश करता हूँ कि as soon as possible results आने लग जाए so that you feel empowered and so that following the plan becomes easier. Best motivation पता क्या होती है? Results and visible results. And our client goal number one is to move our clients from mode of last diet method. See, if you become our client, you would be like, यार इस बंदे के methods work करते हैं. Team YVS coaching last diet method work करता है. मेरा गोल नंबर वन है कि यस लास्ट डाइट मेथड वर्क करता है पे नहीं रहना हमने इसमें लाना है लास्ट डाइट मेथड वर्क्स फॉर मी राइट सो मेरी प्रायोरिटी नंबर वन है कि लास्ट डाइट मेथड वर्क्स ये मुझे भी पता आपको भी पता आप हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स देख रहे हो हॉल ऑफ फेम वाली आप ट्रांसफॉर्मेशन बुक देख लो चाहे हमारी राइट माय प्रायोरिटी नंबर वन इज लास्ट डाइट मेथड वर्क्स फॉर यू राइट एंड so that आपको रिजल्ट आ गया एंड इफ थिंग्स गेट स्लो एंड कुछ केसेस में थिंग्स गेट स्लो ड्यूरिंग द प्रोसेस राइट ये हैक नहीं कर सकते आप राइट बट माय थॉट प्रोसेस इज इवन इफ इट इज स्लो राइट नाउ आई एम गेटिंग यू परमानेंट रिजल्ट्स आई एम मेकिंग इट द लास्ट टाइम यू आर डाइटिंग राइट and we as coaches remind our clients how far we have come by showing them proof what did we do and achieve in the last few weeks few days what was your why right next comes empowerment through results. Next is coaching through knowledge. Because in the end, you are working with humans. As a coach, I am a human, right? At times, you might not trust me. At times, you would be like, यार क्या पता YVS या Team YVS. I'm not saying the truth. But it's very hard to not trust science. So कुछ भी मैं कभी explain करता हूँ, science भी बताता हूँ, logic भी बताता हूँ, और अपना perspective भी बताता हूँ. All three together change the game and increase the trust in process like crazy. So whenever our clients are getting slow results, we explain stuff with science, why and how it correlates to the current situation and how it applies to you. आज जो मैं आपको explain कर रहा हूँ, अपना perspective तो दे ही रहा हूँ. Experience है मेरा of working with what 4,000 plus people. But I'm explaining the science also, the principle also. Slide one पे BMR बता रहा हूँ मैं आपको, physics बता रहा हूँ, law of thermodynamics बता रहा हूँ, right? So we explain the logic like this framework. For example, आपको ये मैं framework और science बता रहा हूँ. We explain the logic that multiplies the trust in process and understanding. Experience, knowledge, science, logic, and how it applies to us. Unbeatable combination, right? So wherever applicable, we explain these things. Next comes coaching with truth. I'm a harsh coach. That means I am empathetic. Empathetic. I understand empathy is important, but not at the cost of well-timed truth. If I'm working with you and if I don't tell you the truth as a coach, or if my team doesn't tell you the truth as a coach, then you know you are doomed. You are at the wrong place, right? So there would be times when you goof up during your transformation plan, when you are making mistakes, when you're saying the wrong thing, right? So at these times, I take the hard route. What is the hard route? Telling you the truth instead of just being a cheerleader. Yes, man, nahi hai. We tell you the truth wherever it is required, right? But we make sure it is well timed because if timing of truth is not good, it can be stupid, right? So our goal is to point you in the right direction and help you improve, right? So at times, me or the team would coach you, be stern with you, coach you, and scold you if required, right? Remind you of the fact that your actions do not align with your goals or your why right now, right? So yes, we are a cheerleader with you, but we are not that cheerleader that would steer you in the wrong direction, right? It's against my principles, right?
Being stern might be harsh for us and you, because obviously hard conversations are difficult, even if we have done them thousands of times, right? But doing the right thing is what matters because you are trusting us to coach you, right? So that's our responsibility, right? Next is all-round approach. At TeamYVS, last guide method will work on all aspects, right? We work on all areas of your lifestyle. We start with fixing nutrient deficiencies, fix your full lifestyle, knowledge. We start with the psychology priming phase. We work on your nutrition, high level of accountability, very important, especially when it comes to women and even men. And stress मैनेजमेंट बिकॉज डीप इनसाइड तो 90% लोगों को पता है यार कि कैसे फैट लूज करना है, ईट लेस मूव मोर. Then why is coaching required? Why would people pay me? Why would you pay me? Right? Why would you pay me a lot of money? Right? And obviously, like I mentioned, hydration very important. If I was making a framework for men, मैं hydration नहीं mention करता because men generally have enough water, women don't. So hydration mention किया. Next is exercise, regular exercise activity because it's very important for your mental health, lymphatic health, your skin, your hair, everything else, right? And sleep, obviously, very important. Sleep is dark horse of a great transformation, and that is what. Also, we work on meditation. Meditation has changed my life personally, right? So we inculcate meditation in everyone's routine. Later on, we inculcate stuff like morning routines, pre-sleep routine, everything in our transformation plan. So we are not just helping you lose weight, we are helping you change your life, right? Also, I take a long-term approach. That means my goal is to make it the last time you're dieting. If because if you lose weight and regain it, what is the point, right? That would lead to a lot of guilt and disappointment, right? So we show our teammates even if things are slow right now, they will be permanent because that is our priority number one. That's why we have a full-fledged phase, lifestyle integration phase to make sure that we learn how to lose weight and we learn how to maintain it and integrate everything in the lifestyle long term. As coaches, we also ensure that we do not get impatient at our end and make unnecessary changes to the plan. एक और भी चीज होती है, बहुत बार क्लाइंट्स आके हमें कहते हैं कि यार ओके मेक चेंजेस टू द प्लान. मैं एक्सप्लेन उनको क्या करता हूँ कि मेकिंग अ चेंज टू द प्लान वुड टेक 2 minutes फॉर मी, but that's wrong for you. So let me coach you, let us coach you because a lot of times, because most of the times when you're making unnecessary changes to the plan, client तो खुश हो जाता है, but it makes the client's life difficult. तो मैं उनको logically और scientifically समझाता हूँ कि why am I not making changes to the plan and why explaining this to you is taking me maybe 3-4 minutes, but making the change to the plan would have taken maybe 50 seconds, right? We have made thousands of plans, right? सो बेसिकली हम आपको टेम्परेरीली हैप्पी करने के लिए वो नहीं करेंगे. यस आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एवर एंड लॉन्ग टर्म. एंड वॉट मेक्स यू हैप्पीएस्ट? नॉट अननेसेसरी चेंजेस, not chasing the shiny object, but a permanent transformation with your health flourishing and everything else leveling up. So this is a game changer and requires high level of trust in self and coaching. वो हम build करते हैं because we know our method works. Our method works for thousands of people, has worked for thousands of people. Literally, we have a book of results, Hall of Fame, Team YVS, right? And that is what. Last but not the least, मैंने जो psychology degree की रही है वो भी हम use करते हैं. So we start every journey with a psychology priming phase, even before we have delivered the plan. So step number one is essentially making you fill in a super detailed consultation form, 200 plus questions, so that we understand all aspects of your life, all aspects of your health, so that we can work on all of these aspects properly and all of your health markers properly. So जब हम आपका प्लान बना रहे थे उस टाइम पे we go make you go through a psychology priming phase to get your mindset ready for the transformation, to from understanding your deep why. What is your why? Why do you want to transform? Because when you have a deep why, you can bear anyhow, right? And we cover principles in relation to how to take extreme ownership of your goals and your life, discipline, importance of sacrifices, saying no to people, how saying no to people is saying yes to yourselves. And these are the principles we use, and these are the principles which have changed thousands of lives, right? Do you want to transform using our last diet method? If yes, fill the form below. If you're watching the video, there would be a form below. Just fill the form below to see, for us to see if you are a good fit for the program, right?
do make sure two things: if you are a good fit for the program and it is the right time for you to transform, right? We don't work with first timers. That means आपने कभी transformation try ही नहीं करी है. If you have 2-3 kgs to lose, we are not the right coaches for you. But if you want to change your life, then we are the right coaches for you, right? So there's the certain strata of people we don't want to work with. The reason for that is it's not because we don't want to help them. We want to help them, but we deep inside know that who we can impact the most. That is people who have been trying to lose weight, people who have lost hope, people whose health is messed up right now, people who have more than 5 kgs to lose, 4 to 5 kgs से ज़्यादा lose करने को है, and that is what our method works for everybody. But these are the kind of clients we prefer because अगर the first time आपकी frameworks like these would help you transform. Just watch these videos and apply it yourself. But if you need deep help, then fill the form below or just simply DM us the word transform on Instagram or just WhatsApp here. And let's see. Number one, we'll see that if you are a good fit for the program, if we can actually help you, and if it is the right time for you to transform. बहुत बार क्या होता है, it's not the right time for you to transform right now. We'll tell you that let's start after a while, right? So that is all you need to do, and let's make it the last time you're dieting with the last diet method, and let's change your life. And thank you for watching. I would love it if you subscribe. I would love it if you share it with someone who might benefit from this, because I'm pretty sure you know a lot of women who might benefit from this. And yeah, and if you like the video, comment, share, subscribe, follow us on Instagram. ये सारे जो frameworks मैं आपको explain कर रहा हूँ यहाँ पे, uh, the notes of these frameworks, basically the text is available on our Instagram also. First I publish on Instagram, and that is what. And see you on the other side. And thank you and bye. And do not forget subscribing, and do not forget messaging if you need our help to transform right now. Thank you and bye. Also, the linked videos, the videos I talked about, are in the captions. Bye.